हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 7.4 स्टार्ट कर दी थी और हमने फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चंस उसके अंदर कंप्लीट कर लिए थे। आज जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं विच आर 6 टू 10 हम वो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो इफ वी मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, इट इज सेइंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट थ्री डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू थ्री ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट ऑल दीज फ्रैक्शंस इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और इसके थ्री ग्रुप्स बन जाएंगे। मतलब ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं basically these are equivalent fractions lying under three groups। तो हम पहले उन सारे फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे और हाथों हाथ ही अब उनको ग्रुप्स में डालते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हम कंसिडर कर लेते हैं दैट वी आर क्रिएटिंग थ्री ग्रुप्स, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड। तो एक्स ग्रुप के अंदर देखते हैं कौन सा फ्रैक्शन आ सकता है। फर्स्ट वाला जो ए फ्रैक्शन है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहेगा, 2/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा 2 एंड 2 6 12। सो 1/6 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/12। तो यहाँ पे हम x वाला ग्रुप वी कैन मेक इट ऑफ 1/2, सॉरी नॉट 1/2 बट 1/6 रादर। 1/6 का हम x ग्रुप बना सकते हैं एंड a विल लाई इन x ग्रुप। व्हाट अबाउट दिस b, इसका हो जाएगा 3 1 3 एंड 3 5 15। सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया आपका 1/5। तो हम y वाला जो ग्रुप है वी कैन मेक दैट एज 1/5 एंड जो b है हम उसको y वाले ग्रुप में डाल सकते हैं। What about the C? It will be 2 4 8 and 2 25 is a 50. That is 4/25. 4/25 in itself is simplest form. Simplest form क्यों हो गया? Because उसके बाद 4 and 25 के अंदर कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे हम इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकें। So that's why 4/25 it's the simplest form. तो ये Z वाला जो ग्रुप हो जाएगा it will be for 4/25 and we can keep the C in the Z group. अब जो डी है इसका क्या होगा, इट विल बी 2 8 16 एंड 2 50 100, 2 4 8 एंड 2 25 सो अगेन इट इज 4/25। सो यहाँ पे जो डी है अपना जेड ग्रुप में चला जाएगा ये। व्हाट अबाउट दिस ई, इसमें 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो इट इज 1/6। 1/6 विल गो इन एक्स ग्रुप, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस एफ, 5 3 15, 5 1s are 5, 25 5s are 25 and 3 1s are 3, 3 5s are 15। So basically 15/75 का simplest form is 1/5। 1/5 कौन सा ग्रुप है, अपना y ग्रुप है, तो इसके बाद a b c d e f इसके अंदर आ जाएगा। What about this g, 2 6 are 12 and 2 10s are 2 3s are 6, 30 हो जाएगा ये, 6 1s are 6 and 6 5s are 30। तो it is coming 1/5। तो g जो है हमारा वो चला जाएगा y ग्रुप में। फिर नेक्स्ट है आपका 16/96। तो इट विल बी 2 8 16 एंड 2 4 8, 1 6 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। तो इट विल बी बेसिकली 1/6। 1/6 हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16/96 एंड 1/6 किस ग्रुप में आ रहा है, एक्स ग्रुप में आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं एच इज कमिंग इन एक्स ग्रुप। Now what about this first one? Sorry, I1, I का simplest form क्या होगा? तो 12 और 75 में क्या कॉमन है, फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है 3। 3 4s are 12 and 3 2s are 6, 1 5 3 5s are 15। तो it will become 4/25। 4/25 का अपने पास एक ग्रुप है, that is Z group, तो Z group में आई आ जाएगा अपना। What about this J? इसके अंदर 2 कॉमन है, तो 2 6 are 12, 2 3s are 6, 1 2, 1 2 2 6 are 12। अगेन इसके अंदर 6 कॉमन है, 6 1 6, 6 6 36। तो दिस 12/72 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/6 हो गया। 1/6 का अपन के पास है ग्रुप, दैट इज एक्स ग्रुप, तो इसमें आ जाएगा आई जे। फिर के लिए क्या करेंगे, 3 1 3, 3 5 3 6 18, अगेन 1/6। तो के वाला आपका आ जाएगा, अगेन इट विल कम इन एक्स ग्रुप। What about this L? It is already in its simplest form 4/25 because इसका आगे कुछ और हम कट डाउन नहीं कर सकते इसको किसी दूसरे नंबर से। तो 4/25 which is L, L will come in Z group। तो अगर हम इधर देखें तो बेसिकली मैक्सिमम जो हमारे फ्रैक्शंस हैं दे आर कमिंग इन X group and there are total 1 2 3 4 5 fractions in this group, whereas if we talk about the Y group 1/5 वाला the group है उसके अंदर only 3 fractions are there, whereas in this 4/25 जो Z group है उसके अंदर there are 4 fractions। This thing you don't need to tell actually, they have not asked this in the question कि कौन से वाले group के अंदर कितने fractions है, but I'm just telling you just for fun, not for fun but बस बता रहा हूँ just for knowledge I think। What about the seventh question? Seventh question, find answers to the following, write and indicate how you solve them।
तो इट इज आस्किंग दैट इन दिस ए पार्ट इज 5/9 इक्वल टू 4/5। तो हम ये कैसे बता सकते हैं? व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केसेस, देयर आर टू ऑप्शंस। या फिर तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें, और अगर इनके जो आंसर्स आ रहे हैं, हमें प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज इक्वल, दैट मींस दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्वल है। या फिर हम उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। तो हम विल बी डूइंग द सिंपलेस्ट फॉर्म वाला मेथड हियर। तो 5/9 को देखें हम, तो इट्स ऑलरेडी इन इट्स simplest form, and 4/5 को देखें तो it is also in its simplest form, because these two fractions are not equal to each other. Even in their simplest form, we can say that these two fractions are not equivalent fractions, or not equal. We directly say for this part. Yeah, so you have to write and indicate how you solve them. So you have to tell this solution here. First, for B part, is 9/16 equal to 5/9. So it's saying is 9/16, 9/16, and then keep it like this, 9/16 equal to 5/9, 5/9। सो अगर हम 9/16 का देखें तो इन दोनों के अंदर भी कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऑलरेडी इट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और अगर हम 5/9 देखें तो इट इज ऑल्सो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, and as they are not equal in their simplest form, that means these two fractions are not equal. You could write as these fractions are not equal in their simplest form. That's why or therefore, sorry, that's why these fractions are not equal. This is one line which you'll have to write at the end of the solution of this problem, है ना? आपको ये line end में add करनी पड़ेगी, then only you could give the reason. This is basically the reason why these two fractions are not equal. इसका एक और तरीका है, by doing cross multiplication of the products. So यहाँ पे 9, if you multiply 9 with 9 and 16/5, 9 9s are 18, and what about 16/5? 16/5 6 are 30, and 5 1s are 5, 6 and 8, 80. So as 18 is not equal to 80, that's why these two fractions are not equal. You could even write this. You could even solve this question by this method also. Now what about the C part? Is 4/5 equal to 16/20? 4/5 equal to 16/20, 16/20। तो अगर हम देखें तो 4/5 ऑलरेडी इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और 16/20 का निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? 4 4s are 16 and 4 5s are 20. So here we can see that these two fractions are equal in their simplest form. That's why we can say that these two fractions are equivalent fractions, or we could say that 4/5 is equal to 16/20. Similar manner में आपका D part भी हो जाएगा अगर मैं इसका करूँ 4 1s are 4. Actually 30 doesn't come in 4's table. So what we can do here is rather 2 2s are 4 and 2 15s are. So basically these two fractions are not equal, because 2/15 is not equal to 1/15, and both fractions are in their simplest form. चलो अब अपन 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन says Ela read 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? So Ela read 25 pages of a book containing 100 pages. So there are total pages how many? Total pages are 100, and Ela read how many? 25 pages equals 25. So if we write this one in fractional form for Ela, then it will be 25/100. She read 25 pages out of 100 pages. And what about this another girl? She is Lalita. Lalita read 2/5. Lalita read 2/5, है ना? So what we have to do here is कि हम इसका equivalent fraction ऐसा find करें so that in the denominator we get 100. अगर हमारे पास 100 आ गया तो we could actually judge कि ललिता ने कितने pages पढ़े out of those 100 pages. So here what number should we multiply 5 with so that we can get 100? We have to multiply it by 20. तो हमें ऊपर भी 20 से multiply करना पड़ेगा,
So basically it will become 40 upon 100. So here we can see that Lalita read 40 pages, whereas Ila only read 25 pages out of 100 pages. That's why Lalita read more pages as compared with Ila. ये question ऐसा हो जाएगा, है ना? And it is asking who read less. So we could say that Ila read less as she read only 25 pages, whereas Lalita read 40 pages out of those 100 pages. Now I just need to put this one for charging. So I'll just pause the recording. तो अगर हम नाइन्थ क्वेश्चन देखें तो here ninth question says Rafiq exercise for 3/6 of an hour while Rohit exercise for 3/4 of an hour. Who exercise for a longer time? So in an hour, how many minutes are there? If you look that minutes, so there are 60 minutes in an hour. So what we can do here is, here they have given in the question that Rafiq exercise for 3/6 of an hour. Rafiq exercise for 3/6 of an hour. So अगर मैं 3/6 को कन्वर्ट करूँ इन मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स में एक्चुअली उसने कितना उसने एक्सरसाइज किया. So for that I'll need to find equivalent fraction of 3/6 so that 60 comes in the denominator. तो उसका मेरे को पता चल जाएगा कितने मिनट्स उसने एक्चुअली एक्सरसाइज करी. So how can I find the equivalent fraction of 3/6 so that 60 comes in the denominator? मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा. It will become 30/60. So basically Rafiq exercised 30 minutes out of 60 minutes. Whereas अगर मैं इधर देखूँ रोहित ने कितना एक्सरसाइज किया? 3/4 of an hour. एक्सरसाइज 3/4 of an hour. तो अगर मैं इस 4 को 60 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? मेरे को 4 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 4 10s are 40. 4 10s are 40 and 4, I think it will be 12. 4 2s are 8 and 4 no, not 12. It will be, I think it will be 15. 15 into 4, yeah, it will be 15. 15 4s are 60. So basically I'll have to multiply this 4 by 15 and मेरे को न्यूमरेटर में 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 15 3s are 45 and 15 4s are 60. That means this explains that Rohit exercised for 45 minutes, whereas minutes MINS, whereas this Rafiq exercised for 30 minutes. Hence, who exercised more? What it's saying, who exercised for a longer time. So here clearly we can see that Rohit exercised for a longer time as compared to Rafiq. Now moving on to the 10th question. In a class A of 25 students, 20 passed with 60% or more marks. In another class B of 30 students, 24 passed with 60% or more marks. In which class was a greater fraction of students getting with 60% or more marks? So basically if we see in the next question, it says that in a class A 20 out of 25 students, 20 passed which were having more marks or 60% marks. So total students were 25 and out of those 25 and out of those 25, 20 students passed with more or equal to 60% marks. Whereas in class B के अंदर अपन देख सकते हैं कि 30 students are there in total, so we can keep 30 in the denominator, and 24 passed with 60% or more marks. 24 students passed. With 60% or more marks. In which class was a greater fraction of students getting with 60% or more marks? तो कौन सी क्लास के अंदर ज़्यादा फ्रैक्शन के स्टूडेंट्स हैं जिनको 60% से ज़्यादा मार्क्स मिले? तो 60% 60% से ज़्यादा मार्क्स मिले. तो अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो हमें क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि लाइक अभी तो ऐसा लग रहा है कि क्लास ए के अंदर कम स्टूडेंट्स को 60% मार्क्स
एम से ज़्यादा मिले हैं, वेरस क्लास बी के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स मिले, बिकॉज 24 इज ग्रेटर देन 20. बट अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में देखें तो हमारे कभी कभी आंसर्स चेंज हो जाते हैं, है ना. वी शुड, अगर हमें दो चीज़ों में कंपेयर करना है तो वी शुड ऑलवेज कंपेयर देम इन परसेंटेज rather than talking about in absolute numbers. क्योंकि when we are talking about total, तो हो सकता है टोटल से अगर हम कंपेयर करें तो चीज़ें ज़्यादा बेटर हो दूसरे फ्रैक्शन से कंपेरेटिवली. दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज कंपेयर देम इन फ्रैक्शनल फॉर्म और इन परसेंटेज. ठीक है, तो अगर हम इस 20/25 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें, rather instead of taking simplest form, what we can do here is 35 और 25 का we can take LCM. So what will be the LCM of 30 and 25? It will be 5 6 are 30 and 5 5 are 25. Now again 6 5 1 are 5. What about this 6? It will be 2 3 are 6 and it will be 3 1 are 3. मैंने थोड़ा सा उल्टा निकाल दिया LCM. We should always start with the smallest prime number. मैंने पहले 5 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया. It is also not wrong, but हमेशा हमें smallest prime number से start करना चाहिए. So it is coming 3 2 are 6 and 5 5 are 25 और 25 2 are 50 53 are 150. So if we look it in the form of 150, चलो इसको तो दे रहने देते हैं. 20/25 जो है हमारे पास, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करूँ एंड आई ट्राई टू गेट फॉर 150 इन द डिनोमिनेटर, तो 150 लाने के लिए मेरे को 25 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6 बिकॉज 5 5 25 25 इंटू 6, तो मेरे को ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो बेसिकली इट इज कमिंग 120 अपॉन 150. दिस गोज फॉर क्लास ए. क्लास ए है ना. क्लास बी के लिए क्या सीन है. बी के लिए अपन को 24/30 दे रखा है और 30 को we'll have to convert into 150. For that we'll have to multiply it by 5 and we'll also have to multiply this 24 by 5. तो ये हो जाएगा अपने पास नीचे तो 150 आ जाएगा. What about 24 into 5? It will be 5 4 is 20, 5 2 is 10, 11 12. Again it is 120 by 150. So here what we can say is, for example, if the 25 students दे रखे अपन को as in total, but if those students would have been 150, तो 150 में से 120 students के अपन marks आ रहे होते हैं which was equal to 60% or more than 60%. Whereas if we look in the class A, same scenario would have taken place. इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं. अगर हम इसका simplest form निकाले तो हमें क्या मिल जाएगा. 2 10s are 20 and oh sorry not 2 2 2 is not common factor. Rather 5 4s are 20 and 5 5s are 25, and here it is uh, 3 3 8s are 24 and 3 10s are 30, then 2 4s are 8 and 2 5s are 10. So as the simplest form of these two fractions is coming 4 upon 5, which is equal, so we can say that in both the classes equal percentage of students or equal fraction of students got 60% marks or more than that. That's what we are going to write in the end. So that's how this question had to be solved. तो हमारी पूरी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई. अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो यू प्लीज जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन a bit slowly maybe. So that's all for today. Thanks for watching.